fascinating thing still is that India, who have 3 matches left, are yet to score a point. 2 matches played, 2 losses, and if they're going to come up on the blind side, they need to improve their cricket very, very quickly indeed. But Pakistan, of course, flying high, once again victorious, and once again that means we have a very happy studio. So let's just run through who we have with us again. Azam Mahmood is here, Rashid Latif, Umar Gul, Sana Mir, Savib Richards and Akib Javed. So the team is intact. No changes in this lineup for the foreseeable future. Fingers crossed. So, Sana. रेड पेन निकाल लिया, खैर है बस सुर्खे बने हुए आज लालो लाल है आपके पास भी लाल है मिल ही है जी जी मैच का डिक्टेट किया वैसे पाकिस्तान ने और बहुत अच्छा किया कि पहले बैटिंग की शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई है बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है स्विंग हुई है और बहुत स्ट्रगल किया लेकिन क्या दोनों ने अपनी विकेट थ्रो नहीं की और नॉर्मली खेला इन्होंने लेकिन गेम को जो चेंज किया लोगों को हैरत होगी वो हफीज़ ने आके चेंज किया है वो ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा था दोनों ने लंबी लंबी बैटिंग की लेकिन प्रॉपरली जहाँ चाह रहे थे वहाँ पे गैप में नहीं मार पा रहे थे प्लेस नहीं कर पा रहे थे लेकिन आप देखेंगे हफीज़ आए उन्होंने 16 बॉल ली हैं जब ये आए तो 26 बॉलें रह गई 16 इन्होंने खेली 10 रिजवान ने खेली 26 बॉलों पे 67 रन पाकिस्तान ने बनाए तो उसका सर दोनों को ज़्यादा लास्ट ओवर जैसे रिजवान खेले वो लेकिन हफीज़ ने जो शॉट मारी थी साथ इस तरह की इनिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग की है क्योंकि शुरू में अगर 2 मैचेस देखें एक मैच देखें तो जोर से मार रहे हैं सामने छक्के आज वो अपनी दोबारा जो पुरानी फॉर्म में थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट है यहाँ पे आपको बॉल को वेट करेंगे आप बॉल के ऊपर नहीं जाएंगे तो हफीज़ को बहुत क्रेडिट जाता है आज के मैच पे नो डाउट रिजवान ने जो बैटिंग की थ्रू आउट ईयर या 2 साल से जो बैटिंग कर रहा है उसका कोई वो नहीं और साथ में बाबर आजम ने भी जो बैटिंग की है ये करते हुए आए लेकिन हमें हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि हफीज़ को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसे बॉलर तो वो टीम में आते हैं लेकिन आज उन्होंने बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में और ये भी अच्छी चीज़ थी कि बैटिंग ऑर्डर उस तरह से चेंज नहीं किया क्योंकि ऊपर करना पड़ेगा फ़खर को नीचे 5 नंबर जाना पड़ेगा अच्छा जी 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 चलिए देखते हैं पाकिस्तान टीम कैसा सोचती है अजहर भाई बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की कोई भी छक्का नहीं लगाया पर स्ट्राइक रेट 142 का रिजवान ने 4 छक्के लगाए 8 चौके लगाए एंड पे जाके एक्सीलरेट किया क्या समझते हैं आगे आने वाले मैचेस में शुरू में टाइम इनको लेना पड़ा पावर प्ले में सिर्फ 29 रन्स पाकिस्तान बना सका पहली बैटिंग करके तो क्या करना होगा थोड़ा सा चेंज अगले मैचेस के लिए आई थिंक देखें जैसे इन्होंने बैटिंग की बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उस वक्त कंडीशन बड़ी मुश्किल थी और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं आज रिजवान फंसे हुए थे तो बाबर तेज़ खेले तो उनकी इनिंग्स में हमें वो नज़र आया कि वो अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए जब बाबर फंसते हैं तो रिजवान ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो आज ज़बरदस्त बैटिंग की इन दोनों ने अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 158 एंड में जो रिजवान का स्ट्राइक रेट था उन्होंने कैचअप किया और वही था जो हम बात कर रहे थे कि विकेट थ्रो नहीं की और अपनी एबिलिटी पे अपने स्किल पे उनको एतमाद था कि लेटर ऑन जो है बॉल थोड़ा सा गीला हो जाएगा बॉल आना शुरू हो जाएगा टाइम स्पेंड करो बॉल की शाइन थोड़ी सी उतर जाएगी तो फिर उस तरह बॉल स्विंग या सीम नहीं होगा तो उन्होंने किया जैसे राशिद भाई ने बात की कि सुबह भी मैंने बात की थी हफीज़ की ना हफीज़ की हमें क्लास नज़र आया देयर वाज टच इन दैट कि कट मारा उन्होंने 2 पहला चौका कट पे मारा फिर जो है गाइड किया थर्ड मैन की तरफ और फिर वो कपल ऑफ लैप शॉट मारी तो वो बॉलर के साथ खेल रहे थे मतलब उनको पता था कि फील्ड प्लेसिंग किधर है कहाँ पे मेरे गैप्स हैं और उन्होंने उस तरह की अपनी इनिंग्स खेली और जितना क्रेडिट मैं दूंगा बाबर आजम को जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है आई थिंक रिमार्केबल इनिंग्स उमर भाई आप क्या ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे जी बिल्कुल जिस तरह मेंशन किया अपना रिजवान ने भी मेंशन किया कि अर्लियर नो डाउट आप अगर देखें दोनों मैचेस में नए बॉल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बैट्समैनों को क्योंकि एक्सपेक्टेड था जिस तरह विकेट पे गास था और 2 मैचेस थे तो ऑब्वियसली उसमें मॉस्टर भी था तो अर्ली ऑन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक नया बॉल था सीम थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और दोनों ने टाइम लिया और आई थिंक जिस तरह रिजवान ने भी के बाद में थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि सीम थोड़ा सा अंदर चला गया फिर बॉल स्किड हो रहा था विकेट पे जो कि सम टाइम जब बॉल स्किड होता है तो बैट्समैन के लिए भी वो अच्छा होता है बल्ले पे आता है जिस तरह हफीज़ आते हैं उसके शॉट लगने शुरू हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ बॉल जो ना वो स्किड कर रहा था इससे पहले वो स्ट्रगल कर रहा था स्लो पिचेस थी
तो आई थिंक ये एक फ़ायदा हफीज़ को ये भी हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसका बॉल मिडल होना शुरू हो गया। तो यस अच्छा ओवरऑल दोनों का कम्बिनेशन देख के रनिंग बिटवीन द विकेट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिस पे टफ टाइम होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक वंस अगेन बड़ा ज़बरदस्त 100 रन का एक और पार्टनरशिप जो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये। बिल्कुल। So the main couple of positives are of course मोहम्मद हफीज की बहुत अच्छी है। नॉन स्ट्राइकर एंड का यही होता है कि जब आपको नहीं पता होता कि आपका क्या है तो नॉन स्ट्राइकर एंड और कप्तान खुद अगर क्रीज पे होगा तो वो डिसीजन ले सकता है कि आप जो है ना आपका मेन प्लेयर है तो आपको डेफिनेटली वो जो राइट डिसीजन था उनके लिए। आई थिंक इससे एक पता ये भी चलता है कि जो नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन है वो कितना इन है मैच के अंदर कि उसको आइडिया हो रहा है कि बॉल किधर हिट हो रहा है, कहाँ पे बॉल पिच हुआ है। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है क्योंकि एक तो आप फोकस करते हो अपने बैटिंग पे भी, साथ ही साथ आपको बॉल नज़र आना शुरू बॉल भी नज़र अच्छी तरह से नज़र आते हो। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा साइन है कि दूसरे एंड पे जो बैट्समैन खड़ा है वो मैच के अंदर एटलीस्ट वो फोकस कर रहा है कि बॉल कहाँ पे पिच हो रहा है, कहाँ पे, जो कि जो रिजवान को भी फ़ायदा हुआ इस चीज़ का और पाकिस्तान टीम को भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीवन वांट टू टॉक अबाउट ट्रम्पलमैन और Well, let's just ask. I mean, the people like that when they play for Namibia, you sort of Pakistan team, everyone seen how good triple man is. So the technique was playing late and tackling that coming in ball. That's why he got beaten Twice, the ball swing outside, away. yeah. So he was making sure that I'm not going to get out bowled or leg before. So that was a good strategy. And this is what I mean, good teams, happy teams, when things are going good, they're enjoying their games, and I think they complement each other, playing for each other. If somebody's in trouble, the other took a bit charge and support him when he was in a bad phase. So this is what I think the ideal happy team, you can say, having a good time, but they should be ready for the big one when it's semi and it's pressure. Remember this mood. This is the best mood of playing, of winning the championship. And because you know, if you have a strong bowling lineup, proper 6 bowlers, you have a very good chance of winning the tournament. Batters can win you games, but the bowlers win you tournaments. तुमने कहा कि very strong bowling lineup और नमीबिया के 5 विकेट्स लिए हमने, ऑल आउट नहीं किया। शाहीन अफरीदी कोई विकेट नहीं, 34 रन, शादाब 35 रन, कोई विकेट नहीं। चेजिंग में डिफरेंट स्टैट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बॉलिंग दूसरी कर रहे हैं, अगर हम नमीबिया को 5 आउट कर रहे हैं तो वरी साइन नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए वो सबके लिए, क्योंकि ये पिचेस जितनी भी बन रही हैं, इवन इन शारजा, इन दुबई, अबू धाबी, अर्ली ऑन द मॉइस्चर and the freshness of the pitch, troubling the batsman. And later on, especially in the evening, the dew coming in, and it definitely is easier for the batters. But in a big game, toss will play a major role. Okay, well, actually, now you've made that point, let's talk about that right now. The people looking for big money, and the time zones. Yeah, well, okay. I understand the, what should we call it, the commerciality of the ICC World event. So the likes of Rizwan and Baba in fine form. Fakhar Zaman missed out again today. He's had 1 score of 30 in the tournament, so a shame for him. But Mohammad Hafiz would have enjoyed that 32, just time at the crease. It does mean the likes of Shoaib Malik haven't had much batting. Asif Ali had that stunning performance at the end of the game the other day to win down in Sharjah. Imad, Shadab, Hassan, Shaheen, Ralph, I mean, they're there to bowl, most of them, but they haven't had a bat yet. At the top of the order, an early wicket went down. Van Lingen went down early. Stefan Bard played well. First game of the tournament of the Super Sixes anyway for him, and he was run out sadly for him, going strongly at 29. Williams 40, that was a good hand. The captain 15. David Visa, who we talked a lot about this morning, not out 43 at the end, but 144 for 5, obviously way short, 45 runs short of what they needed if they were going to try and sneak a surprise win in. So overall, the sequence there says that Pakistan have had. हम थोड़ा सा fall of wickets भी देख लेते हैं इससे पहले नामीबिया के बॉलर्स, और हम अब एक नज़र डालते हैं नामीबिया की बैटिंग। फिर पाकिस्तान ने मतलब बैटिंग अपने हाथ में विकेट्स रखी,
ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आगे नॉकआउट स्टेज में कि रिजवान और बाबर ने अंदर टाइम गुजारा? ये तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, बस एक वरी जो साइन नज़र आ रहा है आपको, फ़खर जमान का एक नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मैच में इनको मेरे ख्याल से ऊपर खिला ही दिया जाए एक मैच में, क्योंकि अगर खेलेंगे थोड़ी सी बॉल बल्ले पे लगेगी और इनको खेलना है, सेमीफाइनल भी खेलना है, तो इनको जब तक पूरा मौका नहीं मिलेगा, शायद एक जो वीक लिंक आपको लग रहा है इस बैटिंग ऑर्डर में फ़खर की सूरत में लग रहा है कि उससे रन नहीं हुए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा आगे की तरफ और अच्छा मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और अब हम फॉल ऑफ विकेट्स करना आसान नहीं है पाकिस्तान पे, पर अच्छी चीज़ पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड में नज़र आ रही है कि तकरीबन सब बॉलर्स को ही विकेट मिली, सिवाय शाहीन आफरीदी आज विकेट ना ले सके, पर बाकी सब बॉलर्स ने विकेट ली। हफीज़ का एक ही ओवर हुआ 11 रन का, बट ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप की तौर पे नज़र आया। क्या और पॉजिटिव, क्या और आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का ठीक करना बिफोर द सेमीफाइनल, क्योंकि हमें पता है अब साउथ अफ्रीका का चांस बहुत नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी नज़र आ रही है, इंग्लैंड से तो इंशाल्लाह मुलाकात फाइनल में होगी, पर उस सेमीफाइनल के लिए कौन सी ऐसी तैयारियां जो पाकिस्तान को करनी होंगी? आई थिंक ओवरऑल जो आज का जो मैच था, अर्ली ऑन हम सब ने मेंशन किया कि टॉस जीत के पहले बारी करना, एक तो ये कि सबको लाइक आपके पास 20 ओवर्स थे, जितने भी बैट्समैन मैक्सिमम वहाँ पे गए उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उनको बारी मिली है। टॉप ऑर्डर हमारा बड़ा अच्छा खेले, मुश्किल टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन है हफीज़ का उसको वापस बल्ले पे बॉल लगना शुरू हो गया, तो एक तो ये पॉजिटिव थिंग है। दूसरा ये कि हमें अब लेट्स सपोज अगर नेक्स्ट मैचेस में हमारे दूसरे बॉलिंग भी आती है तो उस चीज़ की भी हमें प्रैक्टिस होगी। ड्यू थोड़ी सी बात लेटर ऑन में पड़ी है, जो कि बॉलर्स की भी उसमें प्रैक्टिस भी होगी, फील्डर्स का उसमें फील्डिंग का जो एक चीज़ है वो प्रैक्टिस भी हो गई। तो आई थिंक इस मैच में तो जो हमारे फ्यूचर मैच के लिए वो तैयारी तो हो गई। लेट्स सी, आई होप जो चीज़ है थोड़ी सी हमारे जो बैटिंग लाइनअप के, जिस तरह फ़खर की बात राशिद भाई ने की को उसको इतना मौका नहीं मिला, आई होप कि जो हमारा जो अगला प्रैक्टिस मैच है उसमें उसको मौका मिले और वो उसका भी कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है फ़खर का भी कॉन्फिडेंस वापस आना। और अब एक नज़र डालते हैं डेविड वीसा की कि ये लोग स्पिनर्स पे अच्छे नज़र आए अभी तक, इनके जो बैटर्स थे। आज अगर इमाद वसीम के 3 ओवर निकाल दें तो शादाब और हफीज़ 5 ओवर कराएं, 46 रन इन्होंने लिए हैं डेविड वीसा और विलियम्स ने। मतलब हम नामीबिया से इससे पहले ये एक्सपेक्ट नहीं इतना ज़्यादा कर रहे थे कि चलो उनकी मूवमेंट भी वहाँ पे होगी, सीमर्स पे शायद अच्छे हों, पर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आज जो कंडीशन थी ना वो थोड़ा सा बॉल पहले तो ग्रिप हुआ, जब इमाद ने किया थोड़ा सा बॉल ग्रिप हुआ, लेकिन बॉल गीला हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है, और मैंने आपको जैसे सुबह कहा था कि डेविड वीसा जो है ना मुझे सबसे अच्छा प्लेयर लगा है जो राशिद खान को खेलते हुए, तो वो ये दे कैन प्ले स्पिन। अभी आप जो देखें, जो विलियमसन की बैटिंग अगर आप देखें तो उसने बैक फुट पे जो है ना क्रीज में यूज़ रह के पिच पे और बॉलर के सर के ऊपर से 2 बाउंड्रीज खेली हैं, और उसने अपना जो है एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ बॉल खेला, उसने ओपन किया अपने बैट का फेस जो है ना, तो गैप में खेला। तो आई थिंक एक क्रेडिट आपको देना चाहिए कि सॉरी सीरी कम्स इनटू प्ले, हो जाता Shut up. While you're at it, can you ask Siri who's going to win the final, please? That'll save a lot of time. Yeah. पाकिस्तान। तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, इतना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की। आई थिंक कि जो बात हो रही थी यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही थी, या जब हमने बात की कि बाकी लोगों को चांस नहीं मिला, आई थिंक कि विनिंग इज़ अ हैबिट एंड पाकिस्तान इज़ गेटिंग इनटू दैट हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह के इन्होंने अपनी, अगर आप देखें जो पहला हमने स्टैट्स देखे, उसमें जिस तरह रिजवान और बाबर ने अपनी इनिंग्स को पेश किया, वो रिमार्केबल है कि कैसे उन्होंने उस इनिंग्स को पेश किया। अगर 10 ओवरों में 59 है, एंड अप हैविंग 189 आफ्टर 20 आवर्स, तो एक क्रेडिट जाता है। और बाकी जो प्लेयर हैं, जैसे बात की कि फ़खर ज़मान की, जैसे राशिद भाई, जैसे आकिब भाई ने बात की कि वो बिग मैच प्लेयर है, और जो 30 रन की उसने इनिंग्स खेली है, आई थिंक वो क्वालिटी इनिंग्स थी। वो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका मोराल हाई होता है, सारे लोग
अच्छी फॉर्म में होते हैं तो फिर चीज़ें जो है ना आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाती हैं। आई अंडरस्टैंड कि जो अगर आपकी अर्ली 2 विकेट गिर जाएंगे, लेकिन ये लड़के क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ये नहीं था कि इन्होंने पीछे क्रिकेट नहीं खेली हुई, रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और नेट्स में जो है ना वो रेगुलर अपनी बैटिंग कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड कि मैच सिनारियो इज़ डिफरेंट। आप नॉकआउट स्टेजेस में जिस वक्त जाते हैं तो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट के हाउ यू हैंडल द प्रेशर ऑन नॉकआउट स्टेजेस। बिल्कुल। Do you want to ask the left wing about Hassan Ali? Because for him today, that start, being given the new ball for starters, given the opportunity to get straight in there, and that was a good decision anyway in terms of the pitch, and to pick up, first 2 overs were brilliant, a much more... आगे जाके ना इंशाल्लाह जिस तरह पास में इसने परफॉर्म किया है कि ये हमारा ऐसा बॉलर है कि इससे आप एनी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैप्टन को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो इसने कैप्टन को कभी भी वो नहीं किया, हमेशा से इसने डिलीवर किया और ब्रेक थ्रू दिए। और राशिद भाई बहुत अच्छा अंदर भी बॉल ला रहे हैं, बाउंस भी आगे से भी बाउंस ले रहे हैं। शुरू की 2 ओवर अगर आप देखेंगे तो उसमें पेस अपनी कम की है, जो लगा 134 135 पे बॉलिंग की है, लेकिन बाद में इन्होंने पेस जनरेट किए 140 प्लस गए 40। इन पिचेस पे अगर स्लो बॉल रखेंगे, क्योंकि इनका जो मुकाबला जो नज़र आ रहा है शाहीन अफरीदी और रऊफ हारिस रऊफ की पेस पे आ गया है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे दोनों को बड़ी हाइप मिल रही है पेस की वजह से। तो लग रहा है मुझे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ करने की बॉलिंग, लेकिन मैं मोहम्मद आसिफ को देखता हूँ कि 135 130 पे उसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ था। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, इनकी लेंथ है, इनकी स्विंग है, इनका अचानक से बाउंसर है, इनकी स्लोअर वन है, इनका स्लो बाउंसर है, तो उससे हटते हुए नज़र आके ये तेज़ बॉल कर रहे हैं। शायद इनके रिस्क थोड़ी सी चेंज हो रही है, अदर को सही पता होगा, लेकिन जो मैंने देखा ये वजूहत हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट 2 मैचेस में अगर आप देखेंगे 3 मैचेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि ये बॉलर जो लेंथ है इनकी, इनको बहुत आउट करने चाहिए। जी अजहर भाई कुछ आप ऐड करेंगे इससे पहले हम ब्रेक पे? बिल्कुल, जब भी आप रिदम में होते हैं ना तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने ज़ोर लगाना है और आपका बॉल तेज़ जाएगा। तो इस वक्त वही बात है जो राशिद भाई ने की। हम भी जिस वक्त शुएब के साथ या समी के साथ खेल रहे थे तो वो 90 माइल्स प्लस करते थे, तो हमें भी होता था कि यार हमने भी तेज़ बॉल करना है। तो ये बॉलर्स में होता है। और दूसरा ये है कि जब आपको विकेट्स भी नहीं मिल रहे होते ना, तो उस वक्त भी थोड़ा सा होता है कि दूसरे लोग विकेट ले रहे हैं और हाइप जिस तरह क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन आई थिंक कि जो हसन अली का मुझे जो अभी लगा इस इनिंग्स में, जो इस टूर्नामेंट में मुझे लगा, आई थिंक कि वो अपनी जो उनकी सक्सेस है वो 6 to 8 मीटर की लेंथ पे जो बॉल करते हैं उस पे उनकी सक्सेस है। अभी उन्होंने क्या किया कि बॉल थोड़ा आगे किया या थोड़ा बहुत पीछे किया, वो जो 6 मीटर की लेंथ है, 6 से 8 मीटर की लेंथ, उस पे वहाँ बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं की। अगर हम हारिस रऊफ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस हारिस रऊफ नाउ एंड अगर साल पीछे आप देख लें तो हारिस का अभी आप देखें कि उसकी लाइन एंड लेंथ बड़ी कंसिस्टेंट है। वो उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल किया और फिर अपनी वेरिएशन यूज़ की है। जो वेरिएशन भी यूज़ किया है वो भी उसी लेंथ से है। वो ये नहीं है कि बहुत मुंह में के बॉल कर दिया हो या बहुत पीछे कर दिया हो, वो उसी लेंथ पे है। तो हसन अली की सक्सेस भी जो ओवर द ईयर रही है, जिस तरह का उन्होंने रिमार्केबल कम बैक किया अपनी इंजरी के बाद टेस्ट मैचेस में भी, और फ्रंट लाइन बॉलर है हमारा। तो आई थिंक कि सम टाइम जो है ना, इस स्मॉल मैसेज जो है ना, रिमाइंडर उसको वो मिलना चाहिए कि वो ये अपनी चीज़ मिल रहा है, जिस पे आपको स्ट्रेंथ है, जो आपकी जिस पे आपको सक्सेस मिली है। सम टाइम ये होता है कि आप बैक टू बेसिक चले जाते हो कि मेरी बेसिक क्या है, कि मैंने इस टारगेट, इस लेंथ को हिट करना है और ये मेरी सक्सेस है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशंस एंड वील डेफिनेटली bowling composition is important for any team. You cannot have like 5 Shoaib Akhtar or 5 Thompsons. You need different variety. Now you have 2 fast bowlers. One is like very effective with a new ball, Shaheen Shah Afridi, and he needs a partner who actually not going for 150 pace. He is swinging the ball. Shaheen can create a pressure on the batsman. He can use that pressure and take wickets. And then you have Haris Rauf. This is what a 90s style of bowling composition. Because my role was, because I played enough cricket with my brain, because I always knew that, I need to get away. I have to be accurate. I have to be bowling maidens, which Wasim Akram and Waqar can utilize
and bowl aggressively, because I have to give them some space to play around. So this is a very good sign today, because he was swinging the ball. If he wants to go long way, he needs to understand what my role is. Role clarity is the key. But the other side of that, though, is that it gives the captain options. So normally speaking, you open with Imad. So when you have something in the pitch, then you can do Hassan this. Ali is the perfect choice. Yeah. The comparison that you make, having Wasim at the other end, that you just needed to get in the right place, because, as you say, not everyone needs to be at high volume, 140, 145, but because of the fact they may look at you and say you may be the weak link. Weak link. So if you get in the And right, if if you you get are the right accurate- place, you accurate get and some swinging wicket. the ball. Pretorius has been a great example in that Yes. case. He has, Yeah. he has Yeah. taken wickets silently. Okay, right. So another step in the right direction. Okay, well, but there was certainly no mercy shown by South Africa. When they won the toss, they said to Bangladesh, right, this is a cast iron certainty. You are batting first, and good luck. And the scorecard says that it was a tricky pitch to bat on, which is very true. And for Bangladesh, it was a really tough ask. Now, the victory for South Africa puts them up to second place in Group 1, and this makes it a fascinating group as we get to the last few games. England, obviously, if they win their last game, which is against South Africa, they'll be top of the group comfortably with 10 points. But if South Africa can beat England, that's 2 sides on 8. Australia have a couple of games against Bangladesh and the West Indies, so they could also be up to 8, in which case it all comes down to net run rate. So there is still, as I say, a lot of cricket to be played in that group. People need to tick a few more boxes there before they can book their semi-final venues. But for Bangladesh today, let's face it, this was always going to be a tough day. सिर्फ एक टॉप पे आपको 24 लितन दास का नज़र आया, और फिर नीचे जाके मेहदी हसन ने कुछ फाइट दिखाया. रबाडा बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने भी की, और बांग्लादेश बैटर्स ने भी पूरी मदद की. टॉस जीत के जब साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग का फैसला किया, तो कोई ख़ास आगे से फाइट नज़र नहीं आई. सोमिया सरकार, मुशफिकुर रहीम, ये सब भी मिडिल ऑर्डर में कामयाब नहीं हो सके. और उसके साथ साथ नोकिया, अब दोनों जब हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, रबाडा की, नोकिया की, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप भी अजहर भाई बहुत ही एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप, और जैसे जैसे मैचेस ऊपर जाते जा रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि ये और ज़्यादा जेल कर रहे हैं एज ए टीम, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग भी. नो डाउट अबाउट दैट. जैसे आपने बात की कि रबादा ने जो है ना आज टॉन सेट किया है. इस टूर्नामेंट में देखें रबादा ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन आज पहला ओवर उन्होंने किया, एक वाइड बॉल किया, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल किया, और उसके बाद जो एग्रेशन से उन्होंने बॉलिंग की है वो ज़बरदस्त थी. हाँ, वो बॉलिंग साथ साथ देख भी सकते हैं ताकि 20 cricket. That's what they said everything. और ये बॉलिंग कार्ड And, है साउथ अफ्रीका की टीम का. 3 विकेट्स रबाडा, 3 नोकिया, 1 प्रिटोरियस, और डॉट बॉल्स भी बड़ी नज़र आई. शम्सी के 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की. Proper bowling attack, which we're talking about, the composition. In UAE, they have very effective 2 spinners. One is #1 in the world, and Maharaj is also, is a decent bowler. Yeah. And with 245 plus, I think that Rauf is the fastest in this tournament. #2 is Nokia, and Rabada is not far away. If something in the pitch and 2 fast bowlers are running in, and they are tall and strong, and that's their hard length is tough for the batsman. Can I say, when we started this tournament, I was a little worried, because we said something about the pitches, because IPL had been on, maybe some of these pitches will be tired. Well, as it happens, that pitch at Abu Dhabi hasn't been used as much as the pitches at Sharjah and Dubai. And that one today was fresh, and it had proper pace, didn't it? Proper pace and bounce in that first innings. What I think would be quite welcoming for South Africa is the fact that Rabada, who I felt when the tournament began, didn't quite look himself. But today, in terms of being aggressive, you would have heard Javi speak about... got pace, and he was on the spot today. आकिब भाई, इसको जो मैन ऑफ द मैच जो मिला ना, एक तो इसने ऊपर से विकेट आउट की, एक टोन सेट किया. इससे पहले मैं पढ़ रहा था कि रबाडा की जो ना यहाँ पे यूई में 39 आउट है. 39 में से इससे पहले 4 जो आउट थे ना वो पावर प्ले में थे.
आज उसने 3 आउट किए क्योंकि उसको एक विकेट ऐसा पिच मिला कि जहाँ पे वो पेसर को 39 उसके टोटल आउट थे जिसमें पावर प्ले में सिर्फ 4 आउट थे आईपीएल में ओवरऑल यहाँ पे यूए में जो खेल रहे हैं। इसको यूटिलाइज बाद में करते होंगे साथ न्यू बॉल से नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से यही वजह होगी जी वरना ये ऐसा बॉलर है जैसे आज बॉलिंग की न्यू बॉल पर तो ये आउट करता है वैसे। जी बिल्कुल आज पावर प्ले में 3 इसने आउट किए। So are we talking about Bangladesh as well? No, we've seen them. We don't want to rub it in. Poor I mean, look, things. this is a very interesting team selection. Okay. Okay, you know what they have? Like they saw the top green top, good pitch, and the selection is Taskeen Ahmed and Soraful Islam, 2 pacers, and rest of them all spin. And they rested Mustafa Sir. They rested Mustafiz for Rubul Hussain. T10. Rubel It's crazy, yeah. I mean, it's crazy. And Taskeen bowled a really good spell. And they bowled 8 overs, 1 over bowled Mehdi Hassan. Out of 9, there were 4 Taskeen and 4 Soraful Islam. And after 9 over, they were looking around, who's going to bowl now? we haven't got any option. Rubal is sitting, Mustafi is resting. I think this team has got some problems. Definitely something going on because they don't want to play. You look at Taskin, I felt he needed support today. Yeah. And you're so correct. If you have like Mustafiz and that Rubal playing in this game, they could have performed And really. they even really rested Taskeen in the big match against Sri Lanka. I mean, they could have won if Taskeen had played. And he looks good. Taskin looks very, very good, yeah. He's a big, tall guy. Even Namibia knew what to play. They had another pacer. Yeah. So where the Bangladeshis are thinking and then going. Well, they've got 1 game left. We'll see what happens in that one. But let's just go. Despite their lack of resources that you've pointed out so perfectly, I thought Mahmudullah actually at least tried hard with what he had, putting slips in place and treating it almost like a 3-4 or even a test match by trying to get what he could out of it and trying to get people out. And I think that's jamming. And he had only 2 resources. Sending home your point. Yeah, they didn't have to think about it long, that's for sure. And you said about a third seamer would have given maximum support to what Mahmudullah was trying to come Whatever, you win or lose, that's another thing. But look, Namibia with these figures will go home proudly. But what about this? Bangladesh, what do you think will happen? The whole nation, there are plenty of people waiting for them and seeing what the hell is going on. They can't even select 11 from 15. They can't see the pitch. Okay. There was grass. There was green grass. Your turn. Okay, your turn. Akif, I have a job for you. Find out who picks that team before they play their final game and lose to Australia. I think the captain is resting next game because he has to play some other league. उनके कप्तान का लगता है कि खुद टीम सेलेक्ट नहीं कर सकता। आईसीसी के रूल्स हैं इसमें कि जब आपकी टीम किसी भी इवेंट में खेलती है या टेस्ट मैच या ओडीआई या टी20 आपको बेस्ट टीम अपनी खिलानी है इसमें क्योंकि होता क्या है कि ये टीम जो आपने खिलाई ये कहीं से भी बांग्लादेश की बेस्ट टीम नहीं थी प्लेइंग 11 नहीं थी इसमें काफ़ी प्लेयर्स नहीं थे जो कि इस कंडीशन में खेल सकते ये वाहिद मैच है जिसमें मैच से पहले हमने बोल दिया था कि मैच हार जाएंगे इतना आइडिया हमें भी हो गया जब पिच आपने देख ली ग्रीन होती है ग्रीन ग्रास थी उसके ऊपर और उसके ऊपर आपके सारे स्पिनर्स खेल रहे हैं अंडर परफॉर्म किया है आपने ये आईसीसी को इसको एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद इसके इंक्वायरी होनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इंक्वायरी करनी चाहिए कि किस वजह से ये टीम खिलाई गई है ये सीरियस ऑफेंस है आईसीसी के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कह लें या पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कह लें उसके अंदर अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते ऐसी टीम नहीं खिला सकते आप और आप बहुत गुस्सा हो रहे थे एसोसिएट नेशंस पे देखें नामीबिया कितना अच्छा खेल रहा है इनको भेजना चाहिए एसोसिएट मेंबर even they are even associate nations are better than this. Let me draw one better point. Planning, better preparation and better talent. India have been in similar positions over the years in terms of pace. Either Kapil Dev and all the other guys that they would have had.
they would have gone through and found out that they needed to have a little bit more ammunition. Yes. And we've seen the Dennis Lilly camp, in the MRF, camp, yeah. and we would have seen a lot of good guys coming out of that particular system. If you see do that, you think that Bangladesh need to have some sort of similar, something that's similar? yeah, definitely, because I mean, look, they're stuck in their system. System is their clubs and their first-class cricket. Mustafiz was not in the system. They found him from that area, I don't know, Sylhet or something like that. They need to go deeper. They need to go outskirts to find raw talent and bringing them and Dhaka Qalandar. nurturing them. Dhaka Dhaka Qalandar. Qalandars, they need to bring out something. Yeah. You know, the trial, reaching out to the people. If you go around the Bangladesh and find one or two good pacers, and especially emergency for few teams to work on wrist spinners, mystery spinners. Otherwise, these teams will not compete. The top teams where they are progressing, they are looking ahead, they're moving ahead, and they're still in there. Back in 20 years, haven't progressed inch. Akib, tell me, what about their think tank in the dressing room? There's no thing They're gonna make a fish like fish tanks. मेरा ख्याल